In the heart of Pakistan's fertile lands, a new era in agriculture is dawning. The USAID funded economic recovery and development activities commitment to modernizing agriculture practices has taken shape through the training in precision agriculture. Using innovative technologies intervention. This documentary takes you on a journey through a 2-day-long training initiative that aims to equip government agriculture field staff and progressive farmers with the latest skills in precision farming. Traditional agricultural practices face challenges in meeting the demands of a growing population and climate change. The need for innovative solutions has never been greater. Main objective of this training is to enhance the knowledge and skill of the agriculture staff to improve the productivity and sustainability. USAID का मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें एक ऐसी एरिया में सपोर्ट दी that was very much needed. Learning by doing is a cornerstone of this training. Participants are now applying their theoretical knowledge in real-world scenarios. इस ट्रेनिंग में हम लोगों ने ड्रोन की असेंबलिंग के साथ साथ उसके जितने डिफरेंट मोड्स हैं वो सीखे हैं कि हमने इसको कैसे फ्लाई करना है और किस तरह इससे प्रोडक्टिविटी से हासिल करनी है। एंड मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं अपने सर्कल में जाके अपने फार्मर्स को इससे बेनिफिट करवा सकती हूँ। मैंने जो वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखी हैं और टेक्नोलॉजी तो हम लोगों से हमारे फार्मर्स को टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आई वाज लाइक रियली हैप्पी कि मैं अब जाऊँगी और उनको ये टेक्नोलॉजी जो हो ट्रेनिंग भी दूँगी और सेकेंडली उनकी यहाँ पे जितने भी पेस्टिसाइड अटैक्स होते हैं उसमें अब बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आने वाली है। To witness the impact firsthand, the participants embarked on field visits, interacting with local farmers who have embraced precision agriculture. زموږ سره باجوړ کې چې کومه ده نو تقریبا داسې 1100 سکویر میلز 1200 داسې چې زموږ سره کراپډ ایریا ده. بل دی کې چې زموږ سره باجوړ ډېره ښکلې ذمېداره او ډېره ښه ذمېداره کېږي. هلته کې زموږ سره آرچرډ شته، زموږ سره سیریل کراپس کې ویټ دی، میز دی، ډېر په ښکلي انداز دی او ډېر بل پکې چې دی نو ویجیټیبل آرچرډ شته دی. ریسنټلی پکې زموږ سره چې دی انشاءالله ډېر ښه سپیشلی ټنل سیسټم چې کوم دی هغه دی پکې. نو موږ ته ډېر داسې معلومات راله چې انشاءالله د هغه سره موږ په باجوړ کې د دې د ذریعه سره د دې ډرون سپری په ذریعه سره به موږ هلته کې ډېر ښه تبدیلي راولو انشاءالله. As the 2 days long training concludes, a sense of accomplishment and transformation fills the air. ये पहली दफ़ा हुआ है कि हम फीमेल्स को मौका मिला है ऐसे हाई टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग जो अरेंज हुई है, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान चूँकि एक ज़रूरी मुल्क है और इसका इन्हिसार जो है 70% आबादी का जो इन्हिसार है वो ज़राअत पर है। ये चूँकि ड्रोन एक हाई टेक्नोलॉजी है और इसकी हमारे ज़राअत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। In the fields of Khyber Pakhtunkhwa, a new chapter in agriculture has begun. Training in precision agriculture using innovative technologies has ignited a spark of innovation that promises to revolutionize farming in Khyber Pakhtunkhwa. As these government field staff and farmers return to their communities, they carry with them the tools to foster an era of food abundance and sustainability.